And what a day it's been. From Draupadi's Chirharan to national security, from expulsions to privilege motions, from probity to politics, and finally the woman card. Indian politics has delivered another potboiler. Today, the Parliamentary Ethics Committee has recommended the expulsion of Trinamool Congress Member of Parliament Mahua Moitra for allegedly breaching national security. This, mind you, was with a 6-4 majority under scanner, where 47 logins to the parliamentary portal from Dubai. A trail of alleged expensive luxury gifts and foreign trip expenses. Mahua Moitra is accused of highly objectionable, unethical and criminal conduct. The panel also recommends intense legal, institutional, time-bound inquiry by the Government of India. But here's the twist. The Trinamool Congress Member of Parliament, ably supported by the opposition MPs, has played the woman card. Times Now has accessed the details of what really happened inside the ethics panel hearing. We will, over the next half an hour, bring you how the chief of the panel, Vinod Sonkar, repeatedly said it's okay if you don't want to reply, and yet repeatedly he was being heckled by the opposition members of parliament who added a sexual spin to his questions. This, ladies and gentlemen, are exact excerpts. Since the hearing was recorded verbatim, there is no rhetoric or paraphrasing. This is the bare truth of what really happened. Before we delve into the details, let's get you the war of words between the BJP and the opposition members of the ethics panel. The opposition vociferously dissenting on various points to discredit the report. However, the panel chief stood by what he calls was due diligence. Watch this. प्रक्रिया पर हमारा सवाल है। जब प्रक्रिया ही सही नहीं है तो रिपोर्ट का क्या मतलब है? रिपोर्ट पे डिस्कशन 2 मिनट में, पूरा मीडिया वहां था, 2 मिनट में रिपोर्ट पे अडॉप्ट कर ली जाती है बिना डिस्कशन के, और उसके में पूरा रिकॉर्ड भी, मिनट्स भी उसमें नहीं है जो पहले दिन की चर्चा, 1 घंटे की चर्चा। देखिए, आज का एजेंडा ही था कि रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, उसको लेके कल विस्तृत जो जांच हुई थी, पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी सिफारिशों के साथ सम्मानित सदस्यों को भेज दी गई थी, और आज की कार्रवाई का महत्व उद्देश्य था रिपोर्ट को अडॉप्ट करना। इस पर अगर किसी को आपत्ति था तो अपना डिसेंट नोट दे सकता था। उस सम्मानित सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया भी। देखिए, जब ये पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पर पहुंचेगी, पब्लिक डोमेन पे आएगी, पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा एथिक्स कमेटी ने पूरी विस्तृत इसकी जाँच की है। जो भी बातें सामने आई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति आदरणीय महुआ मोइत्रा जी का साथ देगा। जिस तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ, जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ, जिस तरह से रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ढंग से सोचने वाला व्यक्ति सपोर्ट करेगा। There is no evidence crossing. And we want to examine the Darshan Hiranandini. The committee not allowed us. There is no cash transaction evidence. There is no rules for the login ID and other things. So what is wrong with this? That is the issue from the opposition side. So, ladies and gentlemen, the legitimate question we are asking on the Newshour tonight: were ethics and the nation compromised? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the Newshour first. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining me tonight, Aparajita Sarangi, Member of Parliament, National Spokesperson, and also member of the ethics panel, joining me live tonight. Also joining me, Dr. Anand Ranganathan, author. Also with me, Dr. Sanjay Jha, suspended Congress leader. And my first question goes to Giridhari Yadav, Member of Parliament from the JDU and member of the ethics panel. Giridhari Yadav जी, आपका टाइम्स नाउ पर स्वागत है, और मेरा सवाल आपसे, क्या आपका जो आपने कोई डिसेंट नोट दिया था आज, ये जो पूरी चर्चा हुई और उसके बाद आज ये रिपोर्ट की अडॉप्शन हुई, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आर यू satisfied with it, or have you given a dissent note?
हमने डिसेंट नोट दिया है नाविका जी, और बिना चर्चा का, बिना किसी चर्चा का 2 मिनट में हमारे चेयरमैन साहब ने इसको कर दिया, और जबकि लेट से स्टार्ट भी किया, वो उनके मेंबर जब नहीं हो रहे थे पूरा तो वो बाहर ही बैठे रहे, और ये 15-20 मिनट बाद आए, जबकि 4 बजे से मीटिंग इनको शुरू करना था, ये सब 4:20 में शुरू किया। लोकसभा नियम प्रक्रिया संचालन कहता है कि जो चेयर का पद होता है वो 1 मिनट भी देर नहीं कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर को 11 बजे यदि बैठना है तो 11 बजे बैठेंगे, यदि लेट होगा तो कोई दूसरा उपाध्यक्ष बैठेंगे, नहीं तो जो नॉमिनेट पैनल होता है वो बैठते हैं। इन्होंने तो मेंबरों का इंतजार किया कि हमारा 6 संख्या पूरे तब हम अंदर जाएंगे। ऐसा कहीं होता है लोकसभा में क्या? एकदम हम असंतुष्ट हैं, कोई चर्चा नहीं हुआ, बिना चर्चा के 2 मिनट में पास करना, ये तो लगता है देश के संवैधानिक इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलेगा। अपराजिता सारंगी, recommendation of expulsion of a member of parliament is a serious matter. Charges against the panel is, the members of the panel themselves say that they weren't given an opportunity to even discuss, and the report was adopted. No, no discussion on the dissent notes that had come in and the objections that had come in. How would you respond to that? With a very heavy heart, I would say that the expulsion of Mahua Moitra has been recommended by the Ethics Committee. Whatever has happened had to happen, because the kind of behavior, the kind of conduct that had been displayed all through by Mahua Moitra actually merited this kind of expulsion, this kind of recommendation for expulsion, if I can say so. Now, here we must understand that under section article 233 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the Speaker actually directs a particular committee to take up a matter. So under this particular rule, he asked Parliamentary Standing Committee on Privileges and Ethics to take up the matter pertaining to Mahua Moitra. And then there were 3 sittings. We are well aware of the fact that there were 3 sittings, one on 26th of October, where we heard the 2 complainants at length, Dehad Rai and Honorable MP Mr. Nishikant Dubeji. Thereafter, we met on 2nd of November, the day Mahua Moitra ji had been called, and I must tell you, Navika, that the entire day had been dedicated to listening to her. But there was ruckus created by these people, and we had to close the meeting around 5 p.m. It would have gone late into the evening, but they did not allow us to actually take the meeting beyond a particular time. So that day, as we say in English, opportunity of being heard was given to Mahua Moitra. We heard her very patiently. In fact, I must admit here, the opposition members, the ruling party members, all of us together heard her at length. And then thereafter, she lost her cool, and we know what happened there. Today was the day when the report had to be considered, had to be deliberated upon. The details of the report would have been discussed. But I must tell you again, the meeting started on an acrimonious note. As soon as the chairman came and sat, 2 honorable members, I would not like to name, one of course is Giridhari Yadav ji, and the other, he's not here, Mr. Danish Ali, let me name them. They started, again, on an acrimonious note, the whole thing. They started questioning the authenticity, or rather the report as such, the quality of the report as such. So I think when the entire thing started on an acrimonious note and there was a good deal of shouting, the chairman had no way but to ask for voting. Okay. I must mention here that 2 times voting had been done, one on 26th of October and the second on 2nd of November. And again, today, 3rd time the voting was done. So to say that everybody's opinion was not solicited is far from the truth. So again, it was 6-4, as you know, 6 went in favor and 4 against. So, and then thereafter, there was nothing to discuss. The report was accepted. The report has to be sent to Honorable Speaker. He would decide on the future course of action. So this is how it is. I must mention here that the chairman also asked for dissent notes.
He would have just walked away. No, he did not. He came back, he took the dissent notes, he put his signature on the dissent notes, he directed his officials that these dissent notes should be part of the report that would be sent to the speaker tomorrow or day after. So I think these people had prepared the dissent notes in advance when they came inside. They created a ruckus again, and they handed over the dissent notes, and then we all went out of the room. That's how it is. So where is the question of not listening to any one of them? Okay. And well, let me get in Giridhari Yadav ji. 2nd of November. Yeah, I'll come back to you, Aparajita ji, but let me ask Giridhari Yadav ji. Giridhari Yadav ji, पिछली मीटिंग में एक माहौल सा बनाया गया कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू इफ अ वुमन हैज नॉट बीन ट्रीटेड वेल. और मेरे पास हम पार्लियामेंट कवर करते रहे पिछले 25-30 सालों से, तो कुछ सोर्सेज हैं, मैंने कुछ पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्ट्स जो उस मीटिंग के थे, और उसमें मैंने देखा है कि माननीय सभापति के नाम के आगे लिखा गया, जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहती हैं वो नहीं दीजिए. महुआ मोइत्रा जी कहती हैं, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द फर्स्ट वन. फिर वो कहते हैं आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप वो छोड़ दीजिए. और महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है. फिर वो कहते हैं, मैं कमेटी के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब किसी विषय का एग्जामिन हो रहा है, आपको लगे इस विषय का उत्तर नहीं देना है, आप उसका उत्तर मत दीजिए, नहीं दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है. अगर हमारा प्रश्न रिपीट होता है तो आप कह सकती हैं कि क्वेश्चन इज रिपीटेड, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट, कोई बात नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है तो भी आप कह सकती हैं. ये उन्होंने कई बार कहा या नहीं कहा मीटिंग में? गिरधारी यादव जी. देखिए नाविका जी, सबसे पहला बात तो आर्टिकल 21 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो हनन हमारे सम्मान्य सभापति महोदय ने किया है, उसका उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा. आप नहीं पूछ सकते हैं किसी पुरुष हो या महिला हो कि उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या, उसको महिला से तो और नहीं पूछ सकते हैं. और जो हमारे चेयरमैन ने हमारी तीन सांसद महोदया बहन थी, किसी ने एक प्रश्न नहीं किया. इतना उन्होंने गंदा प्रश्न किया है इस कमेटी में कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं. और जब रिपोर्ट आएगी तो आप देखिएगा कि उसको उसके उनके प्रश्न पर क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है. यही तो द्रौपदी का चीरहरण है. द्रौपदी के साथ क्या हुआ था? ये द्रौपदी का चीरहरण उस कमेटी में किया जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने कमेटी का बहिष्कार किया. और महुआ मोइत्रा जी ने भी हम लोगों के बहिष्कार करने के बाद बहिष्कार किया. महुआ मोइत्रा जी के पास जिस निजता के प्रश्न को उठाया हमारे चेयरमैन ने, वो उठाएगा क्या? उनको तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उनको खुद पता नहीं था वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे. वो पढ़ते, एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते थे. वो तो कहिए लोकसभा सचिवालय यदि निष्पक्ष करेगा वो रिपोर्ट, तो आप देखेंगे कि उनको, वो तो स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उनको कोई क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे थे अपने. और दूसरा बात है, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी दो प्रश्न पूछने दीजिए. एक प्रश्न भी हम लोगों को उन्होंने पूछने नहीं दिया. ऐसा थोड़ी होता कि जो स्पीकर है वही सब प्रश्न पूछेंगे और जो हमारे सदस्य हम लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे. उन्होंने एक प्रश्न हम लोग को नहीं पूछने दिया. उन्होंने निजता का जो नहीं प्रश्न पूछने चाहिए, व्यक्तिगत बात, उन बातों का उन्होंने जिक्र किया. उसी बात पर हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते, इससे इसके कोई रिलेटेड नहीं है, आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते. उसके बाद हम लोगों ने बहिष्कार किया. तो अपराजिता जी, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था? जो मेरे संज्ञान में है, उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपकी दर्शन हीरानंदानी से कितनी बार बात हुई, आप जाती थी दुबई तो कितनी बार गई, आप कहां रहती थी. क्या ये प्रश्न किसी महिला के लिए किसी मर्यादा के बाहर हैं अपराजिता जी? इज इट बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ डिसेंसी टू आस्क द क्वेश्चन ऑन वेयर शी स्टेड? The entire proceeding of the Ethics Committee has been recorded verbatim. I would request Navika ji, or a very senior and a very capable journalist, to go through that. In fact, no question which was asked by the chairman was beyond the limits of the affidavit.
everything, every question related to the content of the affidavit, and he was well within his right to ask such questions. Number one. Number two, it was decided, agreed upon earlier, that the chairman would ask the questions first, and thereafter he would be asking all of us to put forth our questions. So to say that chairman only asked and nobody was allowed, this is again far from the truth. Now, number three, I must tell you, Mahua was at liberty not to answer any of the questions posed by the chairman. She could have easily said that this particular question was not applicable and she was not in a mood to answer. The chairman was candid enough to say that any answer could be given to him even in 24 hours. But she declined. She said, no, I want to answer all the questions now, but you cannot dare ask such questions. See, I mean, she should not have been so aggressive. It was unnecessary aggression that was displayed. So she should have said no to any of the questions in which she felt uncomfortable. Now, third and very important is the chairman heard all of us at length, and then thereafter, people like us, actually, whatever we wanted to say, said. Giridhari ji and Danish Ali were very vocal, if I can say, very vocal, to the extent of disrupting the house, disrupting the committee meeting. So to say that the chairman did not allow us far from the truth, I do not agree to that. And I say with all conviction at my command, you can see the recorded proceeding, nothing was asked which was beyond the content of the affidavit. And I am a woman. And if, anything against a woman would have been said, I would have been the first one to object, but it was nothing like that. No Draupadi Chirharan was done. वेल गिरधारी जी, महुआ मोइत्रा जी ने कहा ये पूरी जो उनकी डेपोजिशन है इसमें दो सवाल है. नंबर वन कि उन्होंने अनऑथराइज्ड लॉगिन एक्सेस किसी को दिया, उस पर उन्होंने कहा कि 2019 से उन्होंने दिया था कोई सम पर्सन इन हिज ऑफिस टाइपिंग माय क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस वर माइन बट इट वाज नॉट अनऑथराइज्ड बिकॉज इट वाज माय ओटीपी. तो उन्होंने ये मान लिया कि लॉगिन दिया था. और दूसरा सवाल कि गिफ्ट्स की बात हुई कि नहीं हुई, किसी चीज उनको कोई गिफ्ट्स मिले या नहीं मिले, उस पर भी उन्होंने कहा, और वो यहां भी नहीं बाहर भी इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि उनके दोस्त थे, उन्होंने गिफ्ट्स लिए और एक एफिडेविट में लिखा है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस और गिफ्ट्स हैं. मैं गिरधारी यादव जी ये पूछना चाहती हूं कि अगर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो एथिक्स पैनल की मीटिंग ही क्यों हुई? ये बिना सवालों के जवाब दिए ये तय कैसे होता? और क्या आप भी, महुआ जी ने कहा है कि ये प्रीफिक्स्ड मैच था, मैं आपसे भी काउंटर क्वेश्चन करूंगी कि क्या ऑपोजिशन का भी ये प्रीफिक्स्ड मैच था कि जिस भी मीटिंग में आप जाएंगे आप हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे और किसी ना किसी तरीके से पैनल पर और चेयरमैन पर कोई ना कोई आरोप लगाएंगे? ये भी एक सवाल लोगों ने उठाया. नाविका जी, आप यदि 25 साल से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं तो मैं भी 25 साल से एमपी हूं, पहली बार 1996 में बना हूं. जो प्रश्न किया चेयरमैन ने पूछा कि रात में 10 बजे के बाद आप किन किन लोगों से फोन पर बात करते हैं, उसका हमको 1 साल के कॉल डिटेल दीजिए. ये क्या ये इससे बड़ा निजता का क्या सवाल होगा? आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है क्या? तब हम लोगों ने भी, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमको संविधान ने दिया है. यदि संविधान ने मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी, आप एक्सपल्सन करना जो करना करिए, लेकिन आप मेरे व्यक्तिगत, हम रात में किससे बात करते हैं 10 बजे के बाद, ये बात नहीं पूछ सकते हैं आप. किसी न पुरुष से भी नहीं पूछ सकते, महिला से भी नहीं पूछ सकते. कौन किससे रात में बात करेगा नहीं करेगा ये कमेटी नहीं देख सकती. कमेटी को ये देखना था गिफ्ट मिला, घूस मिला, कैश, ये कहता कैश एंड क्यूरी, 1 पैसे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है और कोई फिक्स मैच नहीं था. हमने शुरू दिन से स्पीकर को हमने चेयरमैन को सपोर्ट किया. यदि महुआ मोइत्रा जी भी कुछ बोलती थी तो हमने उनको भी कहते थे कि यू आर हियर विटनेस, आप विटनेस के हैसियत से बात करें. रिकॉर्ड में आप देख सकती हैं, ऐसा कोई प्रीफिक्स मैच नहीं. लेकिन जब निजता पर प्रश्न करने लगा हमारे चेयरमैन, वो पढ़ के जो आया हुआ था उसीलिए. और जहां तक लॉगिन पासवर्ड देने का बात है, सारे एमपी देते हैं, हमारा भी लॉगिन पासवर्ड कहें. मेन ओटीपी होता है नविका जी. जब तक हम ओटीपी शेयर नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन पोस्ट नहीं हो सकता है. कोई किसी को ऑफिस से टाइप करता है, और इस देश में जितने हम लोग एमपी हैं किसी के पास जीमेल या ईमेल या अपना पासवर्ड आदि हम लोग को नहीं रहता. कोई न कोई स्टाफ पीए घर के लोग देखते ही हैं, इसलिए कोई अनएथिकल बात नहीं है. जानबूझ के आपका अपना स्टाफ देख सकता है, लेकिन किसी कॉर्पोरेट
किसी कॉरपोरेट इंसान का स्टाफ क्यों देख रहा है? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल गिरधारी यादव जी, एक जगह मैंने पढ़ा है, दानिश अली जी का कहना है, दानिश अली जी का कहना, आप किसके साथ सोते हो, किसके साथ घूमते हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो किसी ने नहीं पूछा, ये तो दानिश अली जी ने क्या कहा, वो बात उनसे पूछिएगा आप। ये कहा कि नहीं कहा, क्या कहा हुआ बात ये रिकॉर्ड पर जो मैंने रिकॉर्ड पर जो था, ये कहा कि नहीं कहा। अब दानिश अली जी ने क्या कहा था वो दानिश अली जी से पूछिए। अच्छा, तो आपने नहीं सुना? हमको नहीं जानकारी। दानिश अली जी का बात हम थोड़े सुनते, हम तो चेयरमैन का बात सुनते हैं। दानिश अली जी का बात हम क्यों सुनेंगे? हम आपको बता रहे हैं, ये जो लॉगिन पासवर्ड है सिर्फ ओटीपी मतलब रखता है। ओटीपी मेरा है, यदि हम देंगे तभी होगा। ये जानबूझकर अपराजिता जी, would you want to respond? Did Danish Ali make this statement? Yes or no? Because I'm embarrassed to repeat this statement, but was this said or not? I want a confirmation. क्या बोले? See, Danish Ali ji has been saying, issuing all kinds of statements. But the fact remains that, as I said earlier, nothing was said which was beyond the content of the affidavit. See, the Ethics Committee has to actually satisfy itself. So there would be questions. And who stopped Mahua Moitra ji to say no to any of the questions? She was at liberty to do so. So why didn't she do so? I mean, why did she have to pick up a fight with all of us? With the chairman? All right, so let me ask Anand Ranganathan, also on the panel as Sanjay Jha is. Anand Ranganathan, do you think this matter has been settled on the principle of parliamentary rules and personal liberties, or do you think this is ridden with politics? Good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists. I've been listening very patiently to this very enchanting discussion, and please, I would request a courtesy of couple of minutes of uninterrupted time, because it's very important. While others have delved into opinion, I am intent on talking only facts, and I want to give only facts. So here are the facts. Number one, but before I come to that, I want to say this to avoid all this confusion that has happened over the past 4 or 5 days. I think we should emulate what happens in America and other countries, where parliamentary proceedings and also committee proceedings are telecast live. All these issues of what Danish Ali is saying, what this JDU gentleman is saying, would be seen by public, whether it is true or not. I don't know why, if you can telecast things in America, all these committees, why should you not telecast them here live, like you're telecasting the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha? So that's point number one. Point number two, all this hullabaloo is over whether login and password giving is within the rules. Let me now, and this is very important, first time I'm doing this now. You'll just have to be brief. Anand, I'm very short on time because Nishikant Dubey is joining us on the other side. Very short on time, 30 seconds. 30 seconds. Policy on use of IT resources of Government of India, guidelines for use of IT devices on government network, password policy of Government of India, quoting verbatim now. Section 2.4, sharing of data. Users shall not share their accounts, passwords, security tokens, personal identification numbers, digital signatures, certificate or similar information or devices which is used for identification or authorization purposes. Section 3, Policy 3.1, Policy Statement 3.1.1 for users having accounts of accessing system services. 3.1.1.1, users shall be responsible for all activity performed with their personal user ID. Users shall not permit others to perform any activity with their user IDs or perform any activity with IDs belonging to other users. 3.1.19, passwords of personal accounts should not be revealed to the controlling officer or any co-worker, even while on vacation, unless permitted to do so by the designated authority. 3.1.1.15, the password shall be changed immediately if the password is suspected of being disclosed or Sanjay known to have been Jha, disclosed. matter closed because Mahua Moitra has agreed and confessed that she did all of this. So where is the debate? He has broken the law. Navika, 3 short points. I know we have limited time, so I'll come to the point right away. Number one, Aparajitya Sarangi said, I'm a woman. So, I could not have questioned Mahua wrongly, and I'm speaking the truth. I want to ask her just one question. Madam, did you tweet or protest when the women wrestlers were protesting on the streets of Delhi on the charges of sexual predator action by Mr. Brijbhushan Singh of the BJP? Just answer that before the program is over, madam. Point number 2, Navika.
Very important. The BJP talks that, Mahua Moitra's friend was a corporate. But that exactly is the problem. Prime Minister Narendra Modi's friend also happens to be a corporate, Mr. Gautam Adani. That is the problem. 9 lakh crores were wiped out in 7 trading sessions. This is the view of the world on the Hindenburg report. And all right, Aparajita ji, please answer both the questions in 30 seconds. I'm sorry for the limited time. I can only say that Sanjay ji is deviating from the main concern. He said we have limited time, but he is actually not coming to the issue. Can he justify the unethical conduct of Mahua Moitra? And I must say that after 2nd of November, she has been trying to build a fake narrative. Doesn't he agree or not? She has been playing a victim card. Isn't it true? So I think whatever is the issue today, I think we should focus on that. And the issue is that she shared the login credentials with somebody who is not even within India. He is in Dubai. No, he is an Indian national but has residency rights in Dubai. She can share those login and password with her staff, whom she pays or whom the parliament pays. I also do that. But she can't do that. So I think she has gone beyond the Lakshman Rekha, and that is why the Ethics Committee has recommended the expulsion. Well, we'll have to leave it at that. Will this matter close at this moment, or will there be more divisions between the Treasury and the opposition benches when the Parliament opens again in the winter session? Because that's when voting in Lok Sabha will take place on the recommendation of the Ethics Panel Committee. So please be open for some fireworks. But as I thank all my guests joining me on the Newshour tonight,